Assalamu alaikum students, I am your teacher and welcome to our channel Learners Academy. So today we will discuss about preposition and its types. So before starting our lectures, please like, subscribe and hit the bell icon. Okay, so preposition. What is preposition? A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with something else in the sentence. प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम नाउन या प्रोनाउन से पहले रखते हैं एक चीज़ शो करवाने के लिए, रिलेशन शो करवाने के लिए किसी चीज़ का सेंटेंस में. ठीक है, प्रीपोजिशन को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन शोज़ द पोजीशन. प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स जगह, पहले जगह का बताती है. ठीक है, एग्जाम्पल, Kate is sleeping behind the chair. So behind is the preposition. It is telling us where is Kate sleeping. So Kate is sleeping behind the chair. He sat on the chair. She lost her ring at the beach. So the prepositions are divided into categories of preposition of place, preposition of time and preposition of movement. So first of all, preposition of time. It refers to those prepositions which can be used to show where something is located. It used to show where something or someone is located. So here are some examples for preposition of place: above, after, on, before, and many examples. So it shows that where something or someone is located. कौन कहाँ है, अबव है, ऊपर है, नीचे है, उसने वो बाद में है, वो पहले है. कि अली सिटिंग बिहाइंड द अक्सा. सो बता दे कि भाई उसके पीछे बैठा है, कहाँ है, उसका बताना कि वेयर इज़ लोकेटेड. ओके, नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इट हेल्प्स टू लिंक द नाउन और प्रोनाउन विद द टाइम वैल्यू. इट फंक्शंस एज इंडिकेटर एज टू व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड एन इवेंट अकर. So in short, preposition of time tell us when an event occur. It tell us about the time. So about, before, पहले हो गया, बाद में हो गया, उससे हो गया, इसके ज़रिए हो गया, दरमियान में हो गया, अब तक नहीं हुआ है, पास्ट में हो गया है. तो ये सब कुछ क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स हैं. सॉरी. So preposition of movement. A preposition of movement is used to show movement to or from a place. It tell about or it shows that movement of a place, movement from a place, movement to a place. Okay, now here examples: past, into, behind, onto, through, off, across, towards. So it shows the movement into the like downstairs. Doggy was going downstairs, वो नीचे जा रहा था. और behind बाद में जा रहा था. movement मतलब हम लोग इसके movement भी बता सकते हैं, जैसे after उसके बाद जा रहा था, उससे पहले जा रहा था. ऑफ़ हो गए, मूवमेंट. अब कोई चीज़ ऑन थी, फिर वो ऑफ़ कर दिया है हमने. पंखा मूव कर रहा था, फिर उसे ऑफ़ कर दिया है. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. So today we have discussed about the preposition and its types. It's 3 types. So if you like my video, please like, subscribe and hit the bell icon of my channel. And if you have any question regarding this video, so please ask me in the comment section. And don't forget to like and subscribe. Thank you.